Hello, my dear students. मैं प्रसाद सर from N Infinity Info Solution. Welcome you all for this session. इस सेशन में बात करेंगे a very important concept of array element access and उसका relationship with pointers. अब तक के सेशन में अरे एलिमेंट्स को एक्सेस किया, फॉर एग्जांपल कभी उसको इंडाइसेस के साथ एक्सेस किया, कभी उसको पॉइंटर्स के साथ एक्सेस किया, बट हाउ कंपाइलर एंड एग्जीक्यूटिंग एंटिटी इंटरनली रीच टू द अरे एलिमेंट, ये इस सेशन में पता चलने वाला है. सो इस सेशन में बहुत ही डीप डाइव करेंगे, कुछ आइडेंटिटीज पता करेंगे, एंड आई एम वेरी श्योर दैट दिस सेशन इज गोइंग टू गिव यू अ वेरी कोर इनसाइट्स अबाउट अरे एलिमेंट हैंडलिंग. सो लेट्स मूव इनटू द डिटेलिंग्स ऑफ दिस. So we are back into the VS Code and यहाँ पे pointers in CCPP में what I'm going to do is important concept dot c, right? And form dot c को copy करके I'm just pasting it into important concept dot c में, right? इसको minimize करते हैं, right? Okay. Now to handle the arrays, यहाँ पे मैं एक array को declare and initialize करने जा रहा हूँ. Let us go with integer key. Key is a variable or array of type integer and जिसको मैं initialize कर रहा हूँ with this 5 elements, right? Okay. Now, if I want to print the base address of this array, we know the concept that जो 0th index का element है उसका जो address है that is treated as the base address of the array. तो उसको पहले print करते हैं. So here I'll go with the simple printf statement that printf base address of array is, and हम लोग प्रिंट करेंगे एड्रेस है तो अनसाइंड वैल्यूज में, एंड यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखेंगे एड्रेस ऑफ की ऑफ 0, राइट? जो 0th एलिमेंट है उसका जो एड्रेस है विल बी ट्रीटेड एज बेस एड्रेस ऑफ द अरे. थ्योरेटिकली वी नो दिस कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिकली भी उसको हम लोगों ने चेक किया है, पर हम लोगों ने कभी ये एड्रेस को प्रिंट करके अभी तक चेक नहीं किया. सो लेट्स गो ऑन प्रिंटिंग दिस एड्रेस एंड देन हम लोग आगे बढ़ेंगे आइडेंटिटी की तरफ, राइट? So if I'm executing the code, I'm able to see that it's printing some address, right? Okay. Now, if I want to handle this array with the help of pointer, हम लोग यहाँ पे use करते हैं integer pointer. Let us say integer star IPTR. IPTR is a variable of type integer pointer capable of holding the address of integer variable, right? Now, यहाँ पे I go with IPTR is equal to address of key of 0. So I just want that this IPTR should go on holding the base address of the array, right? तो इसमें सही में base address मिला है या नहीं वो हम लोग एक बार प्रिंट करके चेक करते हैं, right? So here I go with, instead of printing this, I'm just printing the content of IPTR, right? Okay. So let's go on executing this again. And here I could be able to see that both the time it is printing the same address, one with the expression as address of key of 0 and other time with the value of what present inside what IPTR, right? Okay. अभी एक अलग वे से हम लोग इसी एड्रेस तक पहुंचने वाले हैं या नहीं इसको चेक करने वाले हैं. सो IPTR, इसके पहले कभी ये यूज नहीं किया तो बहुत ध्यान से देखना है. IPTR is equal to key. I'm just saying name of the array, I'm just moving it into what IPTR, and यहाँ पे what I'm going to do is इस स्टेटमेंट को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करने वाला हूँ. एंड लेट्स सी व्हाट कम्स इन IPTR when I'm using the name of the array and I'm moving this value into what IPTR, right? And to your surprise, after the execution, please see where we are reaching, and we are able to see that all the three printfs are going to give us what same values. तो पहले दो printfs they are very clean and clear, जहां पे एड्रेस ऑफ की ऑफ 0, 0th इंडेक्स का एलिमेंट का जो एड्रेस है उसको हम लोग कहेंगे बेस एड्रेस. पर यहाँ पे क्या हो रहा है, इफ आई एम यूजिंग द नेम ऑफ द अरे, नेम ऑफ द अरे इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ बेस एड्रेस इन सी एंड C++. तो ये यहाँ पे क्लियर हो रहा है, आइडेंटिटी के रूप में उभर के आ रहा है, नेम ऑफ द अरे इज ऑलवेज इट्स बेस एड्रेस. दो बार रिपीट करेंगे, नेम ऑफ द अरे इज ऑलवेज इट्स बेस एड्रेस, नेम ऑफ द अरे इज ऑलवेज इट्स बेस एड्रेस. आगे जाके जब अरेज के
पॉइंटर्स के, मल्टी डायमेंशनल अरेज के कॉन्सेप्ट एंड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो उस केस में ये आइडेंटिटी विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर अस, राइट? नेम ऑफ द अरे इज ऑलवेज इट्स बेस एड्रेस, राइट? ओके, सो अभी एक स्टेप आगे बढ़ते हैं एंड चेक करते हैं कि इंटरनली हाउ इट इज रीचिंग टू इंडिविजुअल अरे एलिमेंट, एंड उसके लिए एक फॉर्मूला यूज होता है। पहले उस फॉर्मूला को थियोरेटिकली देखेंगे एंड उसको प्रैक्टिकली यहाँ पे वर्क होते हुए भी हम लोग क्रॉस चेक करेंगे, तब जाके ये 100% रिजल्ट क्लियर होगा। सो अरे के किसी भी एलिमेंट तक अगर हम लोगों को पहुंचना है तो अ वेरी स्पेसिफिक फॉर्मूला इज यूज्ड इनसाइड इंटरनली, एंड तब जाके ये पहुंचेगा किसी एलिमेंट तक, एंड द फॉर्मूला यूज्ड इज अरे एलिमेंट is equal to what? Base address plus index multiplied by bytes used per element, right? ये इंटरनल फॉर्मूला यूज हो रहा है। अरे का किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए इट इज इन नीड ऑफ बेस एड्रेस एंड इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय बाइट्स यूज्ड बाय दैट पर्टिकुलर अरे एलिमेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अरे इज ऑफ टाइप इंटीजर, राइट? सो इस अरे को अगर हम लोग ऐसे देख रहे हैं, this is at index number 0, 1, 2, 3 and 4, and let us assume the address is 100. We know that integer takes 4 bytes, so each element is 4 byte apart. So next address is 104, next will be 108, next is 112, next is 116, right? अगर मुझे 33 तक पहुंचना है तो इंटरनली ये कैसे पहुंचता है? इट इज यूजिंग द बेस एड्रेस एंड द इंडेक्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैलकुलेशन देखते हैं, बेस एड्रेस इज 100 प्लस इंडेक्स है इस केस में, इसका इंडेक्स इज 2 मल्टीप्लाइड बाय बाइट्स यूज्ड पर एलिमेंट। हर एलिमेंट यूज कर रहा है 4 बाइट बिकॉज इट्स ऑफ टाइप इंटीजर। सो यहाँ पे हो रहा है 100 प्लस 8 इज इक्वल टू 108, एंड 108 तक पहुंच के इस एलिमेंट को ये एक्सेस करते हैं। दिस इज हाउ इंटरनली इट वर्क्स, राइट? सो यहाँ पे हम लोग एक कंक्लूजन तक पहुंचेंगे, अरे के किसी भी एलिमेंट को अगर एक्सेस करना है तो वी आर इन नीड ऑफ बेस एड्रेस एंड इंडेक्स। These are the only two essential things that we need to reach to any of the element. And इसको आपने पहले सेशन में एक्सपीरियंस भी किया है। कैसे किया है? लेट मी शो यू, राइट? यू आर यूजिंग की ऑफ लेट अस से 3, right? So what is this? This is name of the array, that means the base address, and this 3 is what? Index. So array के किसी भी element तक अगर आपको पहुंचना है तो you need base address, and name of the array is always its base address, and second part you need is what? Index. So आपके पास base address है, आपके पास index है, so you can reach to any element with the help of what? This particular formula. So let's go on checking कि हम लोग अभी पॉइंटर्स के साथ, वैल्यू एट ऑपरेटर के साथ किसी एलिमेंट तक पहुंच पाएंगे या नहीं with the help of this concept, right? And this is going to be a very interesting aspect to understand. So please observe this very carefully. So यहाँ पे what I am going to do is printf array element is %d, and पहला array element को print करके देखते हैं, right? Okay, so to have some separation what I'll do is यहाँ पे मैं एक separator ऐसे print कर रहा हूँ, right? Okay, so now and यहाँ पे I'm just saying that we know the concept that key of 0, हाँ इससे 0th element print होगा, no doubt, right? But just now we got an identity that name of the array is always its base address. So उस base address के ऊपर जो element है, उस base address के ऊपर जो element है वो element print कर पाएंगे या नहीं with the help of value at operator, right? उसको मुझे check करना है. So instead of key of 0, what I'm going to write is value at key, right? And let us try to see that जो हम लोग basic concept theoretically understand कर रहे हैं
कि नेम ऑफ द अरे इज ऑलवेज इट्स बेस एड्रेस एंड उसके थ्रू वैल्यू एट बेस एड्रेस हम लोग प्रिंट कर पाएंगे या नहीं, राइट? ओके, सो compiler is not having any objection. Let's go on executing the code to check it out. And यहाँ पे array element is what? 11. So this is very clean and clear. Second time that name of the array is always its base address, right? Okay. अभी यहाँ पे कुछ mathematical identities के साथ play करते हैं. So when I go with something like this and plus 0 करेंगे, right? Okay. How this is going to work? We know that the conceptually we need only two things to reach to an element. One is the base address of the array and next one is index. So जब भी हम लोग ऐसे लिखेंगे, we know the concept that name of the array is always its base address, right? Plus इसके बाद जो भी नंबर लिखेंगे that is considered as an index. and array के किसी भी element तक अगर पहुंचना है तो you are in need of base address plus index. तो ये index value को it will get multiplied with number of bytes per that element, right? Okay, तो इस केस में भी की ऑफ जीरो मतलब जीरो इंडेक्स का एलिमेंट को प्रिंट करना चाहिए. सो लेट्स गो ऑन चेकिंग इट कि ये प्रिंट कर पा रहा है या नहीं. एंड हियर आई गो ऑन एग्जीक्यूटिंग दिस एंड आई एम एबल टू सी दैट इट्स गोइंग टू प्रिंट व्हाट 11, राइट? ओके, नाउ लेट्स गो ऑन चेकिंग कि यहां पे इफ आई गो ऑन यूजिंग 3, थर्ड इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है? 44 एलिमेंट है. इज इट एबल टू प्रिंट दैट पर्टिकुलर एलिमेंट? लेट्स गो ऑन चेकिंग इट. Right. So here we could be able to reach to that 44, right? Okay, now can we use arithmetic operator in this way? So now let's go on working across the identity that is present with respect to the plus operator, right? For example, 4 plus 5 जब हम लोग लिखते हैं तो can we go on writing 5 plus 4? Can we interchange the operand? Definitely yes, according to basics of mathematics, right? तो जैसे यहाँ पे मैथमेटिक्स में कर पा रहे हैं वैसे यहाँ पे हम लोग कर पाएंगे या नहीं उसको हम लोग क्रॉस चेक करके देखते हैं, right? Okay, so in this case what I'm going to do is I'm just going to interchange these operands and let us see the effect of this onto the execution, right? So यहाँ पे what I'm going to do is इस statement को copy करना हो and here I am saying instead of key plus 3 I'll be using this as 3 plus key and let's go on checking कि जैसे ये mathematics में work होता है can I be able to work with this with respect to programming, right? Okay, ये अलग ही experience होगा. Please observe this very carefully. Yes, and we are able to see that plus operator का जो mathematics का rule है the same thing is applied over here, right? इस केस में इंटरनली वो चेक करेगा जो भी नेम ऑफ द अरे है इट विल कंसिडर इट एज अ बेस एड्रेस एंड जो भी अलग वैल्यू है उसको ये कंसिडर करेगा इंडेक्स. इंडेक्स विल गेट मल्टीप्लाइड विद नंबर ऑफ बाइट्स यूज्ड बाय दैट पर्टिकुलर एलिमेंट, राइट? ओके, और एक वैसे भी इसको हम लोग देख सकते हैं जैसे कि नेम ऑफ द अरे इज ऑलवेज इट्स व्हाट? बेस एड्रेस. एंड जब बेस एड्रेस में हम लोग 3 ऐड करते हैं तो एड्रेसेस के साथ मतलब पॉइंटर नोटेशंस के साथ जब अरिथमेटिक करते हैं सो दिस पर्टिकुलर अरे इज ऑफ टाइप इंटीजर एंड ये जो बेस एड्रेस है ये इंटीजर का एड्रेस होने की वजह से इट विल गो ऑन गेटिंग एडेड बाय दोज मेनी बाइट्स, राइट? उस वे से भी आप इसको देख सकते हैं बट द बेसिक फॉर्मूला वर्क्स एज बेस एड्रेस प्लस इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ बाइट्स रिक्वायर्ड बाय दैट एलिमेंट, राइट? ओके, नाउ यहाँ पे अभी हम लोग रेगुलरली उसको कैसे एक्सेस करते हैं? सो हियर आई गो विद अगेन द सेम कॉन्सेप्ट. यहाँ पे उसी एलिमेंट को प्रिंट करना चाहेंगे बट दिस टाइम विद द हेल्प ऑफ आवर नॉर्मल वे की ऑफ 3, right? Okay, and we know that it is going to print what? Same element because we have provided the name of the array that is the base address and we have provided what? Index, right? So 3 बार 44 element print हुआ. Now my genuine way of thinking जैसे प्लस ऑपरेटर की वजह से ये दोनों ऑपरेंड को मैं इंटरचेंज कर रहा हूं, कैन आई गो ऑन इंटरचेंजिंग दिस इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट एज की ऑफ 3 कैन आई राइट इट एज 3 ऑफ की?
So let's go on checking it something like this. Instead of writing at key of 3, can we go on writing it as 3 of key, right? हाँ, इसके पहले कभी यूज नहीं किया, बहुत ही वियर्ड है, बट कंपाइलर डज नॉट गिव अस व्हाट एनी काइंड ऑफ एरर. यहाँ पे 3 ऑफ की लिखना था, राइट? ओके, एंड लेट्स गो ऑन चेकिंग कि ये वर्क हो पा रहा है या नहीं, राइट? ओके, सो when I run this, I could be able to see that fourth time with the help of this particular weird expression, I'm able to reach to what? Same element, right? So ये बहुत ही एक अलग वे से सेम एलिमेंट तक हम लोग पहुंच रहे हैं. एंड वन थिंग इज विद द हेल्प ऑफ वैल्यू एट ऑपरेटर, अदर वन इज नेम ऑफ द अरेज एंड इंडेक्स के साथ, राइट? ओके, बट वन थिंग इज वेरी क्लीन एंड क्लियर दैट इंटरनली फॉर्मूला यूज्ड इज अरे के किसी भी एलिमेंट तक पहुंचना है तो इट इज इन नीड ऑफ नेम ऑफ द अरे एंड इंडेक्स. दैट्स इट. इट इज इन नीड ऑफ नेम ऑफ द अरे एंड इंडेक्स, name of the array and index and name of the array, right? So if I want to reach to any of the element, how I can reach? What are the various ways? So value add name of the array plus index, this is one way. Value add index plus name of the array, this is the another way. Next one is name of the array of index, and सबसे weird way, index of name of the array, right? Okay, and these are the 4 ways which are going to help me to reach to what? Same element, right? Okay, now in this case दो identities यहाँ पे पता चले कि name of the array is always its base address, and second very important aspect is बहुत ही root level तक किसी भी element तक पहुंचना है तो you are in need of base address plus index, and internal formula is it works for base address plus index multiplied by number of bytes utilized by that element, right? So I hope कि this is very clean and clear. आपके मशीन के ऊपर जरूर ये करके देखना है एंड इस वेरी इंटरेस्टिंग एंटिटी को एक्सपीरियंस करना है. इन केस ऑफ एनी एरर, प्लीज डू सेंड योर snaps of that error to me on my WhatsApp. I'll definitely come with error resolutions, right? So that's it for this session with a very interesting identities of the array element access, and I hope you understood it in an extreme detailing way. That's it from my side for this session. Thanks for the watching. Keep doing programming. Happy learning, and thank you very much.